So I think research अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा लिया हुआ है क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि ये एक थॉट प्रोसेस है एंड दिस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग और जो हम सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं कि आइदर मोर एंड मोर इट्स बिकमिंग कि ये दो तरह की थॉट प्रोसेस है इफ़ यूर आइदर यूर विद मी और यूर अगेंस्ट मी तो अगर सो द पॉइंट हियर वॉज दैट अमीना वॉज अ कैरेक्टर which was more of a thought process. So my research was in journalists, people who think in a certain way from the media, and I think it's an amalgamation of that. Would you agree with me on that? So it wouldn't be just any one person, but kind of a mix of the way of thinking. Hi, this is Keyur from Sinistan. My question is for Sonali ma'am. You must have been offered a lot of OTT shows before this one. So what was the reasons for choosing The Broken News, and did you instantly agree or did you take your time thinking for it? So I have to thank Samir for that because he's been very persistent. He had come to me with, there have been various scripts always coming, touch wood, I've been lucky that way. Look, it's going to be a slightly long answer, but I hope to explain this. I'm very grateful for the career that I have had, and it has been because of the way I look, and I'm thankful that that has been there because it's a visual medium. But somewhere as an actor, after a point you feel, can I go beyond this image? There is more to me. And somewhere I felt I was not getting that across. So after I had my child and when I had taken that break, when I wanted to come back to fiction, I wanted to come back with something which would kind of break that mold a bit and not be in the same mold that what I had done. One, I don't live in the past, and I was done with that phase. I thought I had evolved as a person, and I wanted that to come across in my work now. I had a couple of things that I needed ticked in the role that I chose. Like I mentioned earlier, I wanted the character to have a strong voice. I wanted the story to have certain meaning, and it should mean something for the world also. And I wanted hope, and I wanted to play my age, most importantly. I wanted the liberation of that, and I didn't want to be trapped in not playing my age. So I think this character ticked all those boxes for me. And one more box is that the people you work with is very, very important because you spend so much of time with them, you're so vulnerable around them. So the team was very important, and I think I got the best team possible. So that was a wonderful, coincidence. What a refreshing line you just gave. I have to stop you there. I wanted to play my age. I have very rarely stood on a stage with a mic in my hand and I have actors say that, ma'am. A big round of applause for that because I really do believe this is the coming of age of the thinking of so many actors, and I think OTT and a lot of platforms have actually done this. I still won't hear that possibly after this, so I would like to hold these golden words in my pocket. Next. My question is to Shreya ma'am. How was it being on the sets with Sonali ma'am and Jaideep sir, like on-set experience? I actually consider myself very lucky because I got to be part of both these worlds, not just Awaz Bharti with Ameena, played by Sonali ma'am, but also Josh 24/7, as we saw in the trailer, with Jaideep. I have to say this about her. Of course, I've been fans of both these people, and now I'm happy that earlier I was just a fan, now I'm a friend who's also a fan. To see the sort of dedication and to have that spirit of still wanting to learn is what I saw, in her. It's incredible, the energy that she would come with. And I think today, acting and being on set is such a collaborative process. It doesn't matter आपने कितना काम किया है. मतलब जिसका पहला काम होगा, वही enthusiasm से वो set पे आएगा, और जिन्होंने बहुत काम किया है, जो superstars हैं, वही उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो उतना ही enthusiasm लेकर आएं. So I loved the fact that you firstly made us all so comfortable and allowed us to just share our mind and just your energy. I think she's just smiling all the time, and she's sunshine. So we had long shooting days. So in all of that, just being around her was so lovely. I mean, I really do love you. You know that. And thank you. And with Jaideep, I think just being in the frame with him
I'm looking at him while he's acting. You know, I'm just watching him and I'm like, okay, wait, you're in the scene. His presence, his persona, you know, he's so relaxed. And हमने बहुत बातें की, life के बारे में बहुत बातें की. For me, more than acting, I'm curious to know about the person behind the actor, because that is what I will take back. मुझे सीख वहाँ से मिलती है. तो मुझे बहुत मज़ा आया, and I hope I get to do lots more work with the both of them. Yeah. Oh, yeah. Sonali ma'am, nice to see you after a long time. Thank you. My question is to Vinay sir. Sir, this is a really bold subject what you have selected. It's already, we see in daily life what's going on in this subject, and really good to see BBC and Z team. So what made you to come on OTT with this subject? Because already we see all this in reality, being a journalist. You mean to say bold, right? Yeah. So, okay. जब मुझे ये सब्जेक्ट के बारे में बोला गया, बताया गया बेसिकली, एंड व्हेन आई वॉच द ओरिजिनल शो, एज अ सेड कि बहुत नहीं, एक्चुअली ऐसे शो पे काम करने का मौका नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता. सो रियली आई मीन बिग थैंक यू टू Z5 एंड BBC बोथ कि उन्होंने इस शो को बनाने का सोचा, चाहा और बनाया भी. यू नो, इस शो मतलब समवेयर, you know, something which we really believed in. The show also wanted to say the same thing, you know. और जब वो हो जाता है कि you know you really are married to the content you're working on, like you know you as a person basically are so invested in what you're trying to say, you know. So वो फिर किसी और की कहानी नहीं है, फिर वो हमारी कहानी है जो हम बताना चाहते हैं basically, उसके बारे की कहानी है. And then once that happens, everything else starts falling into place, you know. And ये obviously मीडिया के बारे की कहानी है, दिस इज अबाउट मीडिया, बट आई थिंक दिस मोर देन दैट, दिस इज अबाउट द सोसाइटी वी आर लिविंग इन. यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मीडिया. इट्स वेरी इजी कि अच्छा मीडिया को बोल दो कि नहीं भाई आपने ये कर दिया, तो वो भी तो टर्न ऑन करके बोलते हैं आप देखते हैं, इसके लिए हम लोग दिखाते. तो ये एक सर्कल है बेसिकली, हम लोग उसी के अंदर घुस गए कि क्योंकि कोई देखता है इसके लिए दिखाया जा रहा है, कोई दिखा रहा है इसके लिए देखा जा रहा है बेसिकली. तो थोड़ा सा इस चीज़ को एक हम बहुत भाग रहे हैं एक्चुअली, हमें थोड़ा सा रुक के थोड़ी सांस लेके सोचना चाहिए, थोड़ी सी कोर्स करेक्शन की कहीं पर ज़रूरत है दोनों एंड से. वो शो प्राइमरली स्पीक्स अबाउट दैट, यू नो, मतलब मीडिया वर्ल्ड के बारे में है, बट इट्स मोर अबाउट द काइंड ऑफ कोर्स करेक्शन आवर सोसाइटी नीड्स समवेयर बेसिकली. वो थॉट कहीं पे निकल आए, वो दैट शुड बी द ऑडियंस का एक जो घर पे जो लेके जा रहे हैं, जो रह रहा है उनके साथ, दैट्स व्हाट आवर इंटेंशन इज. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव सक्सीडेड टू अ सर्टेन डिग्री डेफिनेटली. Can we see some of the known faces of media interact, like Amina ma'am, Sonali ji play कर रहे हैं, ऐसा कोई particular, I won't take the names of, तो क्या उनका रोल कहीं ना कहीं आपने उनको पोर्ट्रे किया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता बेसिकली. मतलब मैं इजीली बोल दूँ, एक अच्छा कंट्रोवर्सी भी खड़ा हो जाएगा, बट नहीं. एक्चुअली ये कम ज़्यादा मायनों में हर जगह पर है बेसिकली, दोनों, मतलब गुड बैड दोनों बेसिकली. तो आई थिंक हमने, वी डोंट वांट टू पॉइंट फिंगर एट अ पर्टिकुलर पर्सन, और वो करके कोई फ़ायदा नहीं है. तो फिर वही हो जाएगा कि वो जो टीवी पे हो रहा है हम भी वही कर रहे हैं. तो आई थिंक जनरली हमारा अप्रोच ये रहा है बेसिकली, वी वांट टू स्पीक अबाउट दिस वर्ल्ड. और जो मे बी 20 ईयर्स बैक, 30 ईयर्स बैक जब हम लोग जहाँ पर थे, अब जहाँ पर पहुँचे, किसी को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है एक्चुअली. तो शो ये कहना चाह रहा है. सर लास्ट क्वेश्चन, जयदीप सर ने गोल्डन वर्ड में कहा कि वी मेक जर्नलिस्ट एंड वी ब्रेक जर्नलिस्ट. दैट वाज गुड डायलॉग वाज इन द सीन. वो राइटर ने लिखा है, संबित सर हैं पीछे बैठे, उन्होंने लिखा है. अच्छा, सवाल नहीं था. I want to actually ask you all, just jumping off on his question to the makers, to Nimisha and you, Sameer, because is there a moral responsibility sometimes also, क्योंकि हम लोग इतना समय बता चुके हैं मीडिया में, you know, like the way they say कि like he was saying that so many people say कि ये हम जानते हैं ऐसा होता है, या फिर देखा है ऐसा लगता है. बहुत सारे लोग रियल नहीं जानते, तो जो देखते हैं वो उन्हीं को वही लगेगा. तो कहीं पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आई वांट टू टो द लाइन, बट वी हैव स्टिल मेकिंग अ शो. इसमें कुछ रियलिज्म भी होगा, कुछ रियलिज्म भी होगा, बिकॉज यही फिर पब्लिक समझेगी ऐसा ही होता है. I think there's a huge responsibility. I think what we are talking about is two thoughts and not any people. एक society है आज जो एक type of thought सुनती है और एक society है आज जो एक particular type of thought सुनती है. So we have to toe the line very carefully without trying to portray a particular
notion that we believe in one thought or the other. We've just put out something that we believe is happening in society, and as Vinay said, we ourselves need to reflect on what we want to watch as individuals today. Yeah, and imagine the responsibility when BBC and Z both have their news media houses. So, I mean, the responsibility was really, really immense. Next. Anybody else? Yeah. Hello. Hello, good afternoon. My question is to Jaideep sir. Sir, you have previously worked in web series as well, and actor like Sonali ma'am, like who has stepped newly into the OTT platform, and you guys, you both are very experienced actors. So how it was like? The trailer looks very intense. So please tell us your experience working with Sonali ma'am. कोई होगा जो मेरे सवाल ये मेरे जवाब को नकारेगा कि जैसे श्रेया ने कहा इट्स अ प्रिविलेज टू बी विद हर इन द सेम शो तो हम कोई साथ में सीन नहीं कर पाए वो बहुत अजीब सी बात है बट आई हैव सीन वर्किंग both of them in their new channel and Jaideep, sorry to interrupt, but आपने जो कहा second season, definitely it's for that. war is head on so it was great और वो उनका OTT का पहला वो है जहाँ तक मैं समझ पाया मुझे पूरी बात समझ नहीं आई बट उससे फर्क नहीं पड़ता है OTT वो कभी से एक्टर हैं और हमेशा रहेंगी जहाँ तक मुझे लगता है जब तक वो चाहेंगी और it was brilliant experience with all of them like Taruk was there and of course श्रेया जो के दोनों न्यूज चैनल्स के दोनों एडिटर इन चीफ के साथ काम कर सकती है कर चुकी है उस शो में तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था सबके साथ एंड तारुक ब्रो यू लुकिंग कूल Thank you, sir. Hello. My question is to Sonali ji and Sanjita both. फेक न्यूज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं? Sorry? फेक न्यूज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं? फेक न्यूज़ के बारे में सो आई थिंक थोड़ा सा रिपीट करूंगी जो मैं कह रही थी इससे पहले भी कि ये जो शो है इट्स अ मिरर टू द सोसाइटी और जो विनय सर ने कहा जैसे हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है ये हमको थोड़ा रुक के सोचना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है इन्फॉर्मेशन इज़ सो ईजिली अवेलेबल और मुझे लगता है कि कहीं पे हम कंफ्यूज हो गए हैं कि इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है और हमको लगता है कि इन्फॉर्मेशन नॉलेज है जबकि नॉलेज इज समथिंग दैट यू नीड यू शुड रिवियर यू शुड रिस्पेक्ट बट जो हमें दिया जा रहा है वो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है और जिस दिन हम अगर हमारे देखने वाले व्यूअर्स को अगर हम ये बात समझा सके कि इन्फॉर्मेशन है नॉलेज नहीं है इन्फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए ड्यू डिलिजेंस ज़रूरी होता है और मुझे लगता है कि हर एक को जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास आता है क्योंकि हम इंडस्ट्रियल एज से आगे बढ़ चुके हैं हम इन्फॉर्मेशन एज में हैं टेक्नोलॉजी के एज में हैं यहाँ पे हमें ड्यू डिलिजेंस हर एक खबर जो आपके पास आती है इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आता है उसका ड्यू डिलिजेंस करके अंडरस्टैंडिंग कि ये सही है या फेक है ये आई थिंक सबकी जिम्मेदारी बन चुकी है जब तक कि मे बी देर इज़ अ सिस्टम इवेंचुअली लेकिन इट इज़ सो न्यू ये पिछले 5-8 सालों से ये इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड लिटरली हो चुका है सो आई थिंक एज अ सोसाइटी हम कहीं पे ग्रैपल कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के साथ और हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे और इसीलिए ऐसी कहानियाँ इस वक्त में बहुत ज़रूरी हैं ऐसा मुझे लगता है श्रेया संजीता वो प्यारी संजीता वहाँ बैठी है जी एक्चुअली हमारे शो में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट वो भी दिखाया गया है कि डिजिटल एज में न्यूज़ कैसी स्प्रेड होती है वेल वी कांट एस्केप द फैक्ट दैट येस नाउ it's all about what is happening online, the way things are spread. और इस WhatsApp, Twitter एज में चीज़ें फैलाना, चीज़ें लिखना, बातें करना बहुत कन्वीनियंट और आसान हो गया है बट एट द सेम टाइम हम इसके रेपरकशंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते जब तक वो हमारे घर में बात ना आए
तो एज एन इंडिविजुअल समहाउ मैं कहीं भी कुछ भी पढ़ूं, पहली बार पढ़ के मैं उसे मानती ही नहीं जब तक मैं ठीक से उसके बारे में मल्टीपल सोर्सेज से पढूं या ना पढूं. तो आई थिंक वो एक सिनिसिज्म, आई वुडंट यूज द वर्ड सिनिसिज्म, बट आई थिंक एक जस्ट अवेयरनेस आ गया है कि आजकल मुश्किल है इजीली बिलीव करना या मानना कि क्या सही है और क्या गलत है. बट जस्ट द होप इज़ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग समझे, बिकॉज the media is so powerful. The media has the power to change. It has the power to change for the better and to, you know, make things worse. So I just hope that everyone who's in the position, who has this responsibility, realizes how much they are needed, how much they are valued. And हमारा show, more than pointing out at a person or anything, दिखा रहा है कि जो लोग at the receiving end होते हैं उनके साथ क्या क्या होता है, and at the same time जो journalists हैं, news producers हैं, उनके भी क्या challenges आ सकते हैं in a world like today, जहाँ पे आज बैठे बैठे मैं यहाँ कुछ भी लिख सकती हूँ, you know, and the damage can be done or not. So I think it will be nice for people to introspect when they watch it. और show में बहुत मज़ेदार चीज़ें भी हैं. So it's not just you hard know, hitting only. Of course, there's a lot of interesting tracks that you'll also see. I realized this actually when I realized that Wikipedia could be edited. पहले पता नहीं था लोगों को. Yes. जो भी लिखा होता था बिलीव कर लेते थे सबकी. फिर as my age progressed, others didn't progress. That's when I realized ये तो चल रहा है edit यहाँ पे. Yeah, I think that itself was the biggest realization. All right. Any more? Yes. Or should we just? Yes, please. Hi, my name is Akshay Acharya. I'm from INS Newswire. My question is to Sanjita and Taruk. You know, every character has a set rhythm and a breathing pattern. So how much did you fall back for these characters of yours on the singer or the musician in you? Sorry, could you hear that? Could you repeat your question, Could you please? just actually speak a little louder? Can we just pump the mic up for that? Because I couldn't hear. Did you say breathing rhythm? Yeah. Yeah, rhythm, right? So you're saying that every character has a rhythm and like a sort of set. So how much did you fall back on the singer or the musician in you for this character of yours, both of you? I'm so sorry. I can't actually, even I can't seem to hear. Is it audible now? How did musicians fall back? Yeah, is it audible now? Yes, Yeah. much better. Yes. So I was saying every character has a set rhythm or a breathing pattern. So how much did you fall back on the musician or the singer in you to execute this character? I agree with you that every character has a rhythm and, you know, a set pattern, but I feel like I could separate the two fairly easily, because this was a very you know, different space for me also to be in. I've never done a character like this before. It was extremely refreshing, and the fact that it was so new to me, I think that pattern just kind of came naturally. Actually, I don't know if I'm right about that. Vanessa will confirm. But I also want to add what he's saying. The reason he asked that also is because they both sing. Yeah. That's the reason why also he went into that rhythm. So in case you're wondering कि suddenly इन्होंने singing के बारे में क्यों पूछा, they are both very accomplished singers. That's the reason. I think the space of this show was so kind of disconnected towards at least the musician part of us that we didn't need to kind of relate it to it. And I think we've only found a new pattern going along. Yeah, I feel like acting is such an amalgamation of everything, of all the other art forms. You know, you especially in India, you know, you bring in music, you bring in dance, you bring in, of course, this new. I'm exploring this new artistry or art form altogether, and. I definitely can separate between the two, but I also feel like all my life I've been preparing for this because it's just such a culmination of everything coming together and then, you know, spewing out onto the screen. And let's see what happens. I'm honestly a little nervous, but let's see what happens. I also have to add that, you know, the rhythm and the pattern and stuff also depends on your co-actors. I mean, when you have a person like Jaideep sir sitting in front of you, you know, you tend to follow his rhythm. You know, you tend to adapt to his pattern. You tend to kind of, he sets the tone in the scene. That's the kind of presence he has. So even with Shreya, you know, that was a much more comfortable space for me because it was a familiar space for me because she's been my friend. But like even the
few things I did with Sanjita, it's all different depending on who you're with on screen. So I think that matters a lot. Sonali ji, over here, ma'am. Ma'am, your character, according to you, how do you, is it related to Sonali Bendre in real life or no? So, as an actor, I will say कि हर character में हम अपनी थोड़ी सी खुद को डालते ही हैं और कहीं पे वो कैरेक्टर को अपने साथ लेके भी जाते हैं. तो ये एक मिक्स होता है एज एन एक्टर. आई फील कहीं पे एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मैं कितनी अच्छी तरह से कंपार्टमेंटलाइज करती हूँ मेरे लाइफ को, बट दैट्स नॉट पॉसिबल. हम हमेशा कुछ ना कुछ लेके और देके जाते हैं कैरेक्टर्स के हिसाब से. और इसीलिए फिक्शन करने का मज़ा ये है कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स इनहैबिट कर सकते हो और वो कैरेक्टर्स के बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो आपको रियली फेस नहीं करना पड़ता. सो फॉर मी प्लेइंग अमीना वॉज वंडरफुल, क्योंकि अमीना का जो स्ट्रेंथ है और कहीं पे उसका एक विजन है जो उसको लगता है कि आई एम सेट, मैंने यहाँ तक ये अचीव किया हुआ है और दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ. और कहीं पे आज वो इस जगह पे खड़ी है जहाँ पे सब कुछ जो द वर्ल्ड एज शी न्यू इट, या जिस तरह से न्यूज़ बनती थी या जिस तरह से वो काम करती आई है, जो उसके जो उसका एनवायरनमेंट था वर्क प्लेस का, सब चेंज हो रहा है एंड समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग. और दैट आई रिलेट टू, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आज की दुनिया है वहाँ पे आफ्टर वर्किंग फॉर द लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई हैव वर्कड इन, इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है. with the platforms coming in, अलग अलग different voices को एक platform मिल गया है, different characters को जैसी कहानियाँ हैं उनको जगह मिली है कि हम उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं. Technicians, writers, directors, actors नए जो आए हैं, they are so interesting और वो इतनी अलग चीज़ें कर रहे हैं that for me अमीना की तरह मैं भी एक नई ज़िंदगी को, एक नई चीज़ सीख रही हूँ. So वो I think was something that I really identified with. The need to grow, the need to keep learning and the need to evolve. Hello, guys here. Vinita Sharma from Ad Gali. So my question is to all the actors present over here. See, life is all about choices. So not only in the media world, but also in the entertainment industry, if the crossroad come in your way to choose over such or Sansani or such, so what would you prefer? Because this is the tougher, all of the actors, this is to all. Jaideep sir, आपके साथ start करते हैं. सनसनी या सच, अगर आपको मौका मिले चूज करने के लिए, सनसनी चाहेगा इनमें से सनसनी सुनना, कोई नहीं चाहेगा. सनसनी में कोई नहीं आएगा, आप ये बोल रहे हो? नहीं, कोई नहीं, सनसनी कोई नहीं सुनना चाहेगा. मतलब ये अजीब सी बात है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले सब इस बात को कह रहे थे कि वो चीज आप थोड़ी देर बाद जब उसको आपकी सच्चाई, आपको सनसनी की सच्चाई पता चलेगी ना, तो आप अपने आप को कोसते फिरोगे. तो बेटर है कि आप सच की तरफ रहो, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आसान हो जाती हैं. बचपन में जब ट्रूथ और डेयर खेलते थे, कोई ट्रूथ नहीं बोलता था सर, सब डेयर ही करते थे. मतलब कि फ्रॉम व्हाट आई हरियाणा के गांव में था सर, हमें ट्रूथ डेयर का गेम भी नहीं पता था. अच्छा. Alright, guys, we'll go with you all. और Sonali ma'am, are you ready? Which would you choose? आपकी लाइफ में आप क्या चूज करेंगे? Yes, ये सारे एक्टर्स के लिए. Okay, I think सच डेफिनेटली जो जयदीप ने कहा वैसे, लेकिन ह्यूमन बीइंग हूँ तो कहीं पे कभी-कभी सच में थोड़ी सी सनसनी आ सकती है, पर सनसनी में भी सच होना चाहिए. That I think is the. Absolutely, I agree with her. और इंटरेस्टिंगली मेरा जो किरदार है वही इन दोनों सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड्स के बीच एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है. बिकॉज राधा का कहना ये हमेशा से है कि यस मुझे कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ बतानी है, बट अडेप्ट करना है. आज सब अटेंशन के लिए मतलब बहुत चीज़ें बोलते हैं, एवरीथिंग इज़ अ फाइट फॉर अटेंशन, टू बी हर्ड, टू बी सीन. तो कीपिंग दैट इन माइंड, हम कैसे हमारी कहानी जो ट्रूथफुल है या जो भी हमें पैशनेटली बतानी है, वो हम एक लोगों तक पहुंचने के लिए, एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. सो दैट इज़ द स्ट्रगल. इतना कहना आसान नहीं है कि बस सच हमें बताना है, हमें कहना है तो कह देते हैं लोग मान लेंगे. नहीं, वो
मतलब इतनी चीजें हैं, maybe they're not interested. So maybe like a younger voice like Radha is trying to bridge that gap as to what can I creatively do to be heard. Even if it means adding some sunsani, I'll do what it takes to make my point being heard. It's a such sunny. It's a such sunny. We found a hashtag for the show. I like it. Is that your answer? Such sunny bus. What about you? I would say कि सनसनी भी कभी कभी सच लग सकती है आपको डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू हियर क्योंकि सच एज you know Shreya said is not interesting to people don't want to hear, people want to hear, and the journalists, they know कि ये हम छाप देंगे, ये सब एकदम गल्प करके खा लेंगे अच्छी तरह से. So you have to choose कि आपको मतलब उसमें कितना मसाला डालना है. So I think like my character proposes something and she gets shot down. She's like, तुम आवाज़ भारती में हो. Like you need to get with it and report more of what truly people need to hear more than what they want to hear. And if I had to choose, of course, I would go with such because I'm from Awaz Bharti. Sonali, so next year you'll be season 2. You'll be for Josh, Sansani. Depends. बहुत बढ़िया सवाल. You got all the answers. ना पता भी चल गया season 2 है कि नहीं. Very nicely done. All right, should we wrap up? Last सवाल yes, है. one, yes, please. Yeah. Hi, Naveen from E24. Trailer बहुत ही promising था and Sonali ma'am and whole cast on screen ही सही. Welcome to the gang. And मेरा सवाल नहीं है. It's a task to Taruk. मान लो कि आप अपने किरदार में हो and right now सोनाली मैम आपके सामने बैठी है. I am not going to ask the question. कोई सवाल जो आप सोनाली मैम से पूछना चाहो. You are a journalist right now. She is not the journalist. She is Sonali Bendre. What you want to ask to her? ये सच या सनसनी वाला? Whatever. Whatever. ओहो dangerous. वो सनसनी वाला है. सर मैं अभी उतना बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूँ जो मैं सोनाली बेंद्रे से सवाल पूछूं. सर ये आपका मौका है सर. यही तो होता है. एक मौके की तलाश में रहते हैं लोग. How would you like the news to be broken, ma'am? How would you like? The news to be broken, ma'am. Without the sansani, more with the such. All right, thank you guys. Thank you so much. Perfect. Okay, we'll do a nice photo up now. Sab ek saath pehle. All right. So, ladies and gentlemen, can we please come in front a bit? Just give me 2 seconds. I've got these chairs are heavy. Hang on.